Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 5.3 part 2. So let's begin. See, in this particular lecture, we are going to cover this westernization and modernization. And in the previous lecture, we have already covered the social changes along with Sanskritization, which is a very important topic. And rest of the topic will be covering in the subsequent lectures. All right. So जिन्होंने भी पिछला lectures नहीं देखा है, they just go and watch that first, and then you can come back over here. Okay. So सबसे पहले हम शुरू करते हैं directly with the concept, which is your westernization. नाउ टॉकिंग अबाउट वेस्टर्नाइजेशन, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन was being given by M.N. Srinivasan, and Professor M.N. Srinivasan gave that concept during a study in a village of South India situated in the Kurg. सो ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है विच इज़ योर वेस्टर्नाइजेशन इज बीइंग गिवन बाय द प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, एंड ये उन्होंने एक पेपर लिखी थी. उस पेपर का जो टाइटल था विच वॉज अ नोट ऑन वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, इसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, एंड इट वॉज डन ड्यूरिंग 1956 along with the same timeline, which is why you can say कि ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन का और संस्कृताइजेशन का, they came while the study being conducted in the Kurg of South India. तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई अपॉन दी टेक्निकलिटीज और अपॉन दी लाइक मेजर थिंग्स दैट यू शुड नो कि किन्होंने दिया था, पेपर का नाम क्या था, किस ईयर में दिया था, एंड किस जगह पे स्टडी करके दिया था. एंड नाउ यू नो ऑल दीज स्पेसिफिक डिटेल्स. लेट्स डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ. When you talk about westernization is particularly the changes that was brought into the non-western, and here the non-western societies we are referring to is India, the changes which was brought into India by the virtue of the influence of the western society, which is the Britishers, is being referred to as westernization. सो वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली अगर आप सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो भी चेंजेस आते हैं इन द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी, हम उसे ही वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं. सो बेसिकली हियर कैन से दैट द नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ whatever they copy or take it directly without realizing that whether it is suited, not suited, or good or bad for them, if they just take it up, then you can say that it is westernization. And when you will understand further about the modernization, then we will discuss the differences. As of now, just know about this, okay? So basically, when Professor M.N. Srinivas studied this concept and wrote his paper, then he came out with certain important characteristics of westernization. ठीक है, और वो characteristics क्या क्या थे? First तो ये कि humanity वाला जो angle होता है that you can find in the Western cultures. Of course, it is not to say that it was not there in the non-Western culture, but as a core value, it was there. Because we should also not forget that sometimes in the history you will came across many of such instances when you can see there were very inhuman treatments to the people belonging to certain class and caste. So that was there, and of course western societies में भी ये चीज़ें हैं, that we will talk in the later part when we will discuss about the criticisms. लेकिन अभी के लिए आप जाने कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ अपने ह्यूमेन नेचर के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी या जानी जाती है, यू कैन से टू एन एक्सटेंट. देन एग्लिटेरियनिज्म का मतलब होता है इक्वालिटी, सबको एक जैसा देखना, एंड आप सर्टन वैल्यू सिस्टम्स को आप होल्ड करते हो, जैसे कि आप इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना चाहते हो, आप सबको लिबर्टी देना चाहते हो, आप सबको एक जैसी फैसिलिटीज़ देना चाहते हो, nobody should be like very poor and deprived of certain basic amenities and rights. तो ये values आपको western culture में देखने को मिलेगी. Of course, now being a democratic country, today we are at a position when we can say कि यहाँ पे हम right to equality follow करते हैं. But the paper was written during 1950s, और उस टाइम पे जो 1950s की situation थी, that was not very different what it was before the independence. इसीलिए जो स्टडी की गई थी, यू शुड नॉट टेक इट एज अ फेस वैल्यू इन द टुडेज सिनेरियो. ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हम जो भी बात करें हम बहुत पुरानी बात करें, ओके. एंड ये फीचर्स थे बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन के, जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वेस्टर्नाइजेशन एज अ कंसेप्ट आज की डेट में तो रेलिवेंट नहीं रह गया है.
देन सेक्युलराइजेशन कहने का मतलब होता है इंडियन सोसाइटी की जब आप बात करते हो तो सेक्युलरिज्म is upholded as a constitutional value today, but it wasn't at that point of time. और ये जो secular values है ये वेस्टर्नाइजेशन ने धीरे धीरे इनकलकेट करनी शुरू की इन द इंडियन सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड विच इज़ वाई यू कैन से that it is one such value that is being adopted by the constitution as well, and this is you have already studied in your polity, right? Then initiation of social reform. अब इनिशिएशन ऑफ सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव आउटकम ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन बिकॉज अगर आप पीछे जाओगे तो यू विल सी कि उस टाइम पे सती प्रैक्टिस की जाती थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था. ऑफकोर्स ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन सम और द अदर फॉर्म इवन टुडे, बट अगर आप बात करो कि उस टाइम के जो रिफॉर्मर्स थे, वेदर दैट वाज इंडियन or whether that were Britishers, they try to do their own part in eradicating all those social evils. और ये जो social reform आया था, that was again a outproduct of the westernization. Then the predominance of science and technology. ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने साइंस को काफ़ी प्रायोरिटी दी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया. थैंक्स टू देम आप कह सकते हो कि एटलीस्ट दे हैव ब्रिंग इन रेलवेज. ऑफकोर्स दैट वाज फॉर द हिडन एजेंडा, बट वी शुड नॉट फॉरगेट इट कि एटलीस्ट वो रेलवेज को इंडिया में लेके आए, विच इज़ वाई वी कैन से प्राउडली टुडे दैट द इंडियन रेलवे इज़ वन अमंग्स द बेस्ट, राइट? बट उसकी शुरुआत उसी टाइम पे हुई थी, तो थोड़ा क्रेडिट तो देना बनता है, राइट? सो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी. से इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज व्हेन यू स्टडी अबाउट द गांधीयन फिलोसफी यू विल सी कि गांधीयन फिलोसफी में कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज दैट इज़ हैविंग अ सेंस कि हमें विलेज को पहले डेवलप करना चाहिए, देन वी कैन गो फर्दर. बट इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन अ विलेज टू डेवलप एंड देन यू कैन टेक इट अप, राइट? आपको इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना पड़ेगा, एंड विच इज़ हाउ यू कैन बिकम अ ग्लोबल पावर. और ये शुरुआत अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में काफ़ी शुरू से थी, एंड विच इज़ वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इटसेल्फ वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन. तो ये एक पॉजिटिव आउटकम था बाय विच यू कैन से इज़ बीइंग transferred to the other non-Western societies wherever the Britishers had their influence. Now when you have to write about the impact, so you can clearly write it down, and this was given by Yogendra Singh. So impact क्या हुआ इंडियन सोसाइटी के ऊपर of the westernization? Of course expansion of education, because education at that point of time was limited to few, but with the opening of schools even at the village level you could say that education became at the reach of the common man itself. तो ये भी एक आउट प्रोडक्ट था. क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने स्कूल्स खोले, एंड ब्रिटिशर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम had a certain interest in education, but that faded away with time. But anyways, you could say that that was one of the output or the impact on the Indian society. And then humanism और rationalism की feeling. Rationalism की अगर आप बात करते हो तो बहुत सारे ऐसे practices हुआ करते थे which was not at all rational. May it be the practice of human sacrifice also that was being stopped by the Britishers. और ये जो कुछ pointers है you should always study in the modern history itself. तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. देन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज वी जस्ट डिस्कस कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस रहा था, एंड विच इज़ वाई द इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इनटू पिक्चर, एंड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन द अर्बनाइजेशन फॉलोड इट, राइट? देन द इंक्रीज इन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन की भी अगर आप बात करें, चाहे वो पोस्टल कम्युनिकेशन की हो, चाहे वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की शुरुआत हो, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की शुरुआत भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुई, एंड विच इज़ हाउ it got transferred to the other part, right? Growth of nationalism, then cultural conflict with the indigenous tradition. So this one, the cultural conflict with the indigenous tradition, this you could take as somewhat like in the negative impact, you could say, because जो tribals होते हैं specifically, they have certain practices which might not make sense to other, but it makes a lot of sense for them. और इतनी ज़्यादा रेशनल थिंकिंग की वजह से एंड इतनी ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग की वजह से विच वॉज एन आउट प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ऑल दीज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स केम इन टू पिक्चर. तो ऑफकोर्स यू कैन से कि ये एक तरीके से दी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रखा था, ठीक है? देन वेस्टर्नाइजेशन किन किन लेवल्स पे हो सकता है? अगेन ये वेस्टर्नाइजेशन किन किन लेवल पे हो सकता है, वेस्टर्नाइजेशन एज अ कंसेप्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया. सपोज लाइक आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, एंड देयर दे आर आस्किंग यू टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. तो आप वेस्टर्नाइजेशन एज अ कंसेप्ट डालोगे, किसने दिया, कब दिया, कहाँ दिया, वो डालोगे. यू कैन राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन राइट अबाउट द रेलेवेंस इन द प्रेजेंट डे इटसेल्फ, एंड देन यू कैन जस्ट कंक्लूड. दैट वुड बी इनफ.
बट व्हाट इफ अगर आपको वेस्टर्नाइजेशन पे ही यूपीएससी का कभी दिमाग चकरा जाए एंड दे विल आस्क यू टू 15 और 20 मार्क का क्वेश्चन, इन दैट केस यू शुड हैव सम कंटेंट, एंड विच इज़ वाई वेस्टर्नाइजेशन 3 लेवल्स पे होता है, दैट यू शुड एटलीस्ट नो। और इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। तो अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल तो वही हो गया व्हेन यू जस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न कल्चर। ये वेस्टर्न कल्चर है एंड देयर इज अ लेम पर्सन हु केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस वेस्टर्न कल्चर एंड बाय द वर्च्यू ऑफ विच ही बिकम द प्राइमरी पर्सन हु गॉट इन्फ्लुएंस्ड और हु गॉट वेस्टर्नाइज्ड, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे वेस्टर्नाइजेशन कब होता है? सेकेंडरी लेवल पे तब होता है व्हेन दिस पर्सन हु गॉट वेस्टर्नाइज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस western person came in contact with some other person, or you can say when he go back to his town or society. Like आप स्वदेश मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, शाहरुख खान came in contact with the NASA people and he got westernized, and then when Shahrukh Khan come in his village and he can influence the other villagers, that is the secondary westernization. Tertiary westernization अब क्या करते हैं? Tertiary westernization तब होता है when at the tertiary level are those who came to know indirectly about the devices introduced by the British. तो ये हम वेस्टर्नाइजेशन उस टाइम की बात करें अलग अलग लेवल पे, तो अब ये कब होगा? व्हेन यू जस्ट डोंट कम इन कॉन्टैक्ट विद एनीवन, मतलब जो विलेजर्स थे वो शाहरुख खान के कॉन्टैक्ट में नहीं आए, बट दोज विलेजर्स स्टार्टेड गेटिंग टू नो अबाउट द नासाज रॉकेट एंड एवरीथिंग, एंड दे गॉट टू नो ओके साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड साइंटिफिक कल्चर क्या होता है, साइंस इतना प्रोग्रेस कर रहा है, हाउ वी आर गेटिंग द मोबाइल सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स एंड एवरीथिंग. So in that way, if they get enlightened, so that is the tertiary westernization. I hope it is clear. Okay. एंड वेस्टर्नाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख लिया, बट हियर आई हैव इंक्लूडेड इन डिटेल इफ यू वांटेड टू हैव अ लुक ऑन टू इट, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें हैं इन अ वेरी एक्सपैंडेड फॉर्म कि लीगल सिस्टम यूनिवर्सलाइज हो गया, एजुकेशन पे इम्पैक्ट आया, कम्युनिकेशन, नेशनलिज्म, इवन फूड हैबिट पे भी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से काफ़ी चेंज आया है, ड्रेस पैटर्न में चेंज हुआ है। तो दिस इज इन डिटेल, देयर इज नथिंग वेरी हाई फाई अबाउट इट, तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस योगेंद्र सिंह वाला मॉडल, ऑलराइट। Now, westernization के जो criticisms हैं, of course, there's one case study also related to the westernization of Kerala society. And एक चीज़ और आप include कर सकते हो, केरला के society में earlier the matrilineal was very prevalent, it was practiced, but it was completely banned at a certain point of time. So that is also because of the rising influence of the westernization. Westernization की वजह से जैसे जैसे modern education आई, जैसे जैसे society की dynamics change हुई, and which is how you could see कि जो मेट्रिलिनी वाला कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं खोता चला गया, एंड दैट्स हाउ दी इट वाज कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम दैट सोसाइटी, केरला सोसाइटी। तो वो भी आप इंक्लूड करके लिख सकते हो, ठीक है। देन क्रिटिसिजम्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की अगर बात करें तो वेस्टर्नाइजेशन एज अ कंसेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर श्रीनिवास, दैट वी ऑल नो, और उन्होंने इसको काफ़ी इथिकली न्यूट्रल बताया था। इथिकली न्यूट्रल कहने का मतलब है कि जो सर्टन कॉन्सेप्ट्स है, लाइक ह्यूमैनिटी की हमने बात करी थी, इग्लिटेरियनिज्म की बात करी थी, सो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज़ है, बट इवन व्हेन यू लुक डीपर इनटू द वेस्टर्न सोसाइटी इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वेस्टर्न सोसाइटी में रेसिज्म, कलर प्रेजुडिस, color segregation, even exploitation of the worker during the industrial revolution, and even after that, even the slavery का भी जो कंसेप्ट है, बिकॉज अगर आप वेस्टर्नाइजेशन की बात करो, अगर इंडियन सोसाइटी में तो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट था, बट वेस्टर्नाइजेशन एज अ कंसेप्ट हम जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है इंक्लूडिंग द यूएस, हम उनकी भी बात कर सकते हैं। तो यूएस हो चाहे यूके हो, इन सभी जगहों में यू विल फाइंड द प्रिवेलेंट ऑफ स्लेवरी प्रैक्टिस, and that is of course not at all human, so you cannot just justify that westernization can have all the good qualities only. So this is one of the major criticisms of this, that you could definitely write it down. And it is too local label, and the model which is imitated may not be western country but even Russia or Japan. सो यहाँ कहने का ये मतलब है कि हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की बात करी, उनमें से काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वेस्ट तक ही प्रिवेलेंट नहीं मिलेंगे। हो सकता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दैट वाज नॉट देयर इन इंडियन सोसाइटी, बट apart from Indian society, there were many other Asian countries as well where you could find all those values. So saying westernization as a concept belongs to West itself is flawed, and again this is one of the criticisms of this particular concept, ठीक है।
And westernization in one area or level of behavior does not result in westernization in other related area or level. So basically कहने का ये मतलब है कि आप वेस्टर्नाइज हो गए, मे बी लाइक यू वेस्टर्नाइज योर सेल्फ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट दैट डजंट मीन कि you have implemented all those western features in every spheres of your society. Even at that point of time, the UK, the condition of women were not so good. Women were not having certain rights at their disposal. They cannot make their own choices. तो ये सारी चीज़ें हैं विच यू कुड रिलेट विद द वेस्टर्नाइजेशन, बट इवेंचुअली आपको ये सारे फीचर्स वेस्टर्नाइजेशन में देखने को नहीं मिलेंगे. सो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि giving a tag of westernization over to a particular country and claiming it is like so good is not at all true. तो ये broader criticisms है westernization के, and I hope you could clearly write it down. अब quickly relationship हम देख लेते हैं between the westernization and sanskritization. So basically westernization और sanskritization both the concepts were given by Professor Srinivas. अब इन दोनों में क्या कुछ similarities थी या एक दूसरे को ये complement करते थे? So basically when you talk about westernization, so it is said that the westernization accelerates the process of sanskritization. How? Because with the westernization you will have good technology, you will have good sources of income, might be there is industrialization and everyone can earn equally well if they have certain skill sets. So इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे the people who belongs to the lower strata can gain certain visibility in the society, and that's how they climb the ladder of getting into a higher strata. So which is why you can say that westernization accelerate the sanskritization. Also westernization as a concept is associated with good and quality education, and when you are quality education and you get educated, you somewhat try to minimize the impact of caste and rather focus more upon the class, बिकॉज आप वहाँ पे स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान देते हो rather than दी पर्सनस कास्ट कि वो कहाँ से बिलोंग करता है. एंड दिस इज इक्वली ट्रू फॉर टुडेज वर्ल्ड. आज के डेट में भी यू विल सी दैट द कंसेप्ट ऑफ caste and class, the class matters the most, especially in the urban setup, than the caste. So that you can say that this is one of the relationship between the two, right? Because जो वेस्टर्नाइज हो जाता है उसके केस में आप ये भी देखोगे that they have left all the old rituals or the practices which they don't find any rationale. तो ये भी एक good भी आप कह सकते हो, and like somewhat it is bad because this is ruining the entire culture. But at some point it is good because they are treating everyone equally with humanity, with that particular touch कि okay, everyone is equal, everyone has equal rights, and everyone has right to live. We are no one to exploit others. So ये कुछ features हैं that you could say and relate from the westernization to sanskritization and the vice versa. Okay. Now modernization as a concept, because as I told you today we'll study about the westernization and modernization. तो अब ये modernization है क्या वो देख लेते हैं. जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी से अगर आप बात करते हो तो दिस वाज गिवन बाय नील जोसेफ स्मेल्सर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम. सो बेसिकली इनका मानना था कि मॉडर्नाइजेशन इज अ काइंड ऑफ एन कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस that takes place in the society as it attempt to industrialize, which means जब आप बात करते हो मॉडर्नाइजेशन की तो it should come along with the economic growth, the industrialization, the development of the country. So जैसे जैसे एक country grow करेगी, develop करेगी, specifically in this economic term, it will get modernized. And when you talk about the views of the anthropologist S.C. Dubey, in his work Contemporary India and Modernization, which he wrote during the 1974, इनका ये मानना था that modernization is not a product of replacement, but a product of assimilation. So you could sense that modernization is somewhat a positive concept that we are talking about here, because यहाँ पे कोई replacement नहीं हो रहा. It's not something that you're replacing your culture and adopting someone else's culture. It is something you're assimilating. आप धीरे धीरे कुछ assimilation भी किन चीज़ों का, something better, something good for you. और ये automatically as नील जोसेफ told us कि ये industrialization से ही आता है, industrialization का out product है, right? और हम जब वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं सिंपली, तो वेस्टर्नाइजेशन के टर्म्स में क्या होता है, द नॉन वेस्टर्न कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न and getting influenced without considering whether it is good, not, or feasible for them. But in the case of modernization, जैसे जैसे कंट्री के पास रिसोर्सेज आएंगे, ग्रोथ होगा, वो अच्छे की तरफ मूव ऑन करेगी, राइट? सपोज लाइक अ सिचुएशन कि आज की डेट में अगर आप बात करते हो
of owning a AC or a refrigerator or a washing machine. This was there even like 50, 60, 100 years ago. बट उस टाइम पे ये आपकी कंट्री तक आना उतना फीजिबल नहीं था. बट जैसे जैसे ये फीजिबल होता गया एंड जैसे जैसे ये चीज़ें अफोर्डेबल भी होती गई आपके कंट्री में आई, नाउ यू हैव ऑल दीज थिंग्स एट योर डिस्पोजल. दैट इज मॉडर्नाइजेशन. ओके. सो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी है. प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन के अंदर इसमें सोशल चेंजेस भी आते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं. इन सभी के अंदर कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं एंड थ्रू दिस प्रोसेस द मॉडर्नाइजेशन केम इनटू picture. All right. And there are certain views that you can include about all these anthropologists and sociologists. Then Daniel Lerner, he gave certain dimensions of the modernization. Of course, you will find some overlapping with the westernization, of course. अब इसके अंदर कौन कौन से डायमेंशन थे? टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, अलग अलग डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे इन मॉडर्नाइजेशन. टेक्नोलॉजी में आपको मॉडर्न एंड साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा. देन इकोनॉमिक में यू विल सी there's a liberalization. Consumerism, of course, is one of the outproduct of modernization that you could again take in a positive or rather a negative way as well. Occupational mobility भी होती है. When modernization comes into picture, certain caste or a group is not being limited to a certain work only. There's occupational mobility. They can try and work in any of the skill sets, in any of the field depending upon their skill sets. Then political participation भी बढ़ता है because of the modernization, because there is a concept of election, democracy. ज़्यादातर आपको modern societies में देखने को मिलेंगे. Of course, it's not a compulsory mandate, but yes, of course, जहाँ भी आपको modern societies देखने को मिलेंगी वहाँ पे आपको ये certain features, equality, liberty, ये सब आएंगे ही आएंगे पिक्चर में. उसी तरह social जो conditions है उसके टर्म्स में भी आपको मॉडर्न सोसाइटीज़ में कुछ सर्टन फीचर्स देखने को मिलेंगे विच इज़ देयर इन एवरी सच मॉडर्न सोसाइटीज़. साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं. रेशनलिज्म आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का भी पार्ट था बट यहाँ पे भी है. कॉस्मोपॉलिटनिज्म, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी अलॉन्ग विद द मॉडर्नाइजेशन. एंड ऑफ कोर्स depending upon the number of marks of the question, you can expand it and give examples from your own understanding as well. Because ये सारी चीज़ों को अगर आप रट के लिख भी लोगे and everybody writing the same thing will not fetch you good marks. Okay, so take this opportunity and try to think of your own things. Some case studies are also included. Read about it so that you can get an idea what kind of a case study you have to look around and include. और in the worst case scenario अगर आपको कुछ नहीं मिलता you can of course include these, but I would rather suggest कि अगर आप कुछ और अलग case study से collect कर पाए in the contemporary world itself, because you all read the newspaper, you will get so many such case studies. ठीक है. Now talking about the modernization versus westernization. So modernization और westernization मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, like westernization as a concept कहीं ना कहीं एक negative connotation भी हो जाता है, but in case of modernization mostly you're talking about the positive changes. ठीक है, बिकॉज ये ग्रेजुअल होता है, ये एसिमिलेशन होता है, इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ एनीथिंग. एंड इट्स इज ऑल्सो कंसिडर टू बी वैल्यू न्यूट्रल, बिकॉज यहाँ पे आप किसी और एक पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ को थोप नहीं रहे हो. यू आर ट्रांजिटिंग इन योर ओन पेस, इन योर ओन मैनर एंड ट्राइंग टू एसिमिलेट थिंग्स विच यू फील इज़ गुड फॉर योर पर्टिकुलर सोसाइटी. और कुछ इंडिया के टर्म्स में अगर आप बात करो तो इंडिया में democracy, secularism, although all these things comes along with the Western influence as well, but these are also part of the modern society. Modernization का भी आउट प्रोडक्ट है ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो इस टर्म्स में आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ क्रिटिसिजम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. तो जैसे मैंने बात करी कंज्यूमरिज्म की, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन. उसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. फॉर एग्जाम्पल जो आपके वैल्यू सिस्टम्स है, जो रेशनलाइजेशन की आप बात करते हो, कभी कभी कुछ चीज़ें हम रेशनलाइजेशन की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, राइट, बिकॉज यू डोंट फाइंड रेशनल इन इट. सपोज देयर इज सम old medicine practitioners, especially in the tribals. The modern MBBS doctor will never get agree with the ideas or with the thought because there is no scientific rationale behind it. Similarly, आज के डेट में अगर आप देखोगे, हमने जजमानी सिस्टम की बात करी थी. दैट जजमानी सिस्टम हैज़ बीन गॉट रिप्लेस्ड विद द अर्बन कंपनीज एंड मेनी सच अदर एप्स, राइट, बिकॉज हम मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं. वी आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड दैट जनरेशन ओल्ड सिस्टम. So that is again a criticism of modernization itself. Matlab it's quite easy. You can definitely come up with many such ideas and write it down. Okay. And with this, we have finished this particular lecture, and I'll come up with the next lecture very soon. Thank you so much.